In the heart of Assam, where culture meets biodiversity, there's a place that whispers tales of a bygone era and echoes the symphony of nature. Welcome to Wild Masir, a British Assam property in Tejpur. Join us on an extraordinary journey as we unveil the secrets of a 150-year-old British heritage property, जहां हर एक पौधा एक कहानी बताता है और प्रत्येक सूर्योदय एक नया अध्याय लिखता है। वाइल्ड मसीर, जिसका नाम दुनिया की सबसे कठिन गेमिंग फिश के नाम पर रखा गया था, उसकी स्थापना 1864 में ब्रिटिश असम टी कंपनी द्वारा की गई थी। आदाबारी टी एस्टेट के बालीपारा डिवीजन के बीच 22 एकड़ भूमि में फैला वाइल्ड मसीर 1 लाख से ज़्यादा पौधों, 72 से ज़्यादा तितलियों के प्रजातियों और 90 से ज़्यादा पक्षियों का प्रजातियों का एक जैव विविध आर्क है। Wild Masir, justifying the meaning of jungle bathing, lets you immerse yourself in wildlife safaris, bird watching, embark on plant hunting, activities like tree hugging, sailing through the mighty Brahmaputra river on a wooden country boat and witnessing endangered Gangetic dolphins and a lot more. जब यहाँ पे गेस्ट आते हैं तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेचर ट्रेल कर सकते हैं। And as you know that we have 300 different species of plants, which is like all belongs to local species, which are like all indigenous to Eastern Himalayan region. And also we provide bird watching, dolphin watching, and one can also enjoy slow cycling here. अच्छा, आप साइकिल प्रोवाइड करते हैं तो हाँ, टी एस्टेट्स में पूरा स्ट्रॉल करके साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जी, साइकिलिंग कर सकते हैं। और हम लोग का इन हाउस जो हमारे इधर रास्ते हैं उधर पे भी स्लो साइकिलिंग कर सकते हैं। वाइल्ड मसीर इज सराउंडेड बाय 8 एथनिक कम्युनिटीज़ और यहाँ रहकर आप भारत तिब्बत, भारत म्यांमार और चाय जनजाति समुदायों की रिच हेरिटेज, कल्चर, डांस, म्यूज़िक, आर्ट फॉर्म्स, वीव्स, क्विजीन्स और बहुत कुछ की दिल से उपभोग कर सकते हैं। और ऐसे ही आसपास के समुदायों के लोगों के साथ जुड़कर उनके बीच एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हम वाइल्ड मसीर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। You can also experience serenity coupled with amazingly delectable cuisines. अपने हॉलमार्क ब्रिटिश असम के स्वाद के अलावा भी वह अपने डाइनिंग पेविलियन फर्स्ट फ्लैश में भारतीय भूगोल के विभिन्न स्वादों को भी पूरा करता है। उनके एथनिक किचन एलिफेंट एप्पल में असमीज क्विजीन के अलावा भी अन्य समुदाय जैसे नेपाली, बोरो, गारो, तिब्बती, मिसिंग, निशी और आदिवासी के व्यंजनों का भी स्वाद ले सकते हैं। So Anisha, how's the food? You're liking the food? Very nice. Thank you. So you know this restaurant of ours, which is called the First Flush. This was originally a garage. Okay. Yeah. So once it was taken over, this was converted into a restaurant. Okay. So this is a place where all 3 meals are served. All the guests come here and they enjoy their meals. We serve home-style food, but our strength is flavors of British Assam. We also cater to the flavors of Eastern Himalaya from our community kitchen. Okay. So, you know, people can get a variety of food to tingle their taste bud, from simple food to they get the touch of ethnicity, I must say. Yes. They also that comes from our community kitchen. We have a setup which is called the Otanga. Okay. So from there we serve all our ethnic cuisine there. So you must have noticed the greenery all around here with so much of thick foliage. You know, this place is also like a wellness retreat. And when we
talk about wellness or think about wellness, we basically associate it with a gym or a yoga. Yeah, but it's more than that, you know. When you come to a place like this, which is so full of green, fresh air, you breathe in the fresh air, you know, that is the time, that is the actual wellness that we should be talking about, you know, connecting with the nature. This pure air, I think, is something that, you know, relaxes us, rejuvenates us, and brings peace to our mind. And that, I think, is the real wellness that we should be focusing more on. So I think this place is a fantastic place for people who can, you know, looking for some kind of a peace, meditation. Away from the pollution of the city. Yes, far from the maddening crowd. You just connect with nature and with yourself, which is, I think, very important. 1 घंटे की ड्राइव के अंदर वाइल्ड मसीर मीसा पोलो क्लब जाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, जिसमें 18 होल गोल्फ कोर्स और टेनिस सुविधाएं हैं। इसके अलावा भी दे हैव एन एंटीक बिलियर्ड टेबल, एन एंटीक पियानो एंड एन एक्सक्विजिट बार विद इन द कन्फाइंस ऑफ द टी गार्डन। Right now, I am at this heritage bungalow, commonly known as the Bara Bungalow, which has completed 150 years of rich history and is characterized by elegant Victorian architecture. Let's have a look. Certified as a heritage building by the Directorate of Archaeology, यह बंगला 150 वर्ष से अधिक पुराना है। 19वीं के दशक के अंत तक यह मैक्लॉयड रसल टी कंपनी के विजिटिंग एजेंट्स या बरा साहिबों का आधिकारिक निवास था। The Bara Bungalow narrates the story of tea gardens of Assam unfolded by keepers of its culture and legacy. बाबा कमरा को मुख्य रूप से विजिटिंग एजेंट्स के बच्चों के लिए रखा गया था। दलाई लामा, गायत्री देवी से लेकर आमिर खान, जिन्नत अमान जैसे कई बॉलीवुड हस्तियां और यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी यहाँ कई रातें बिताई है। Wild Masir has 6 heritage bungalows, each having its own unique charm, story of history and adventure. आप अपने एकेडमिक एक्सकर्शन, रिसर्च वर्क या ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस आयोजन करने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। So this place is a great place for having educational institutes coming over, especially like schools, universities. In the past, we've been having a lot of schools which have been coming, especially the Assam Valley School has been coming on a regular basis. Excursion or research work? They come on excursions, as well as I think this is the perfect place for people to come and do the research. Right. They can come. What better place can be there be? You have nature all around you. So we have a concrete conference room here, which can sit about 34-35 people. And what better place than to have a conference right outside in the midst of nature with the flora fauna around you, and where you can de-stress yourself totally. And we've had some very serious conferences where we've hosted the Assam, to name Assam, the Assam Arunachal border dispute meet was hosted here. Apart from them, we've been having regular SBI and Coca-Cola and Volkswagen. There have been some of our people who we've hosted in the past. At Wild Masir, the echo of heritage and the chorus of nature harmonize. This isn't just a destination, this is an experience. So आप यहाँ आए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ आए, डे आउट कीजिए, 5-6 दिन का नाइट स्टे कीजिए, and let this memory be a part of your story.